अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर अपसेट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बात करेंगे उसके हवाले से भी, और भी बहुत सारी डिस्कशन होंगी। इंग्लैंड का दौरा है, पाकिस्तान भी कुछ दिनों में टीम बस यहाँ आने वाली है, 3 दिन रह गए हैं, 27 को टीम आ जाएगी इंग्लैंड की। यहाँ पे सारी चीज़ों के हवाले से होगी डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। हो सकता है आप अभी एक मैच देख के फारिग हुए होंगे फीफा वर्ल्ड कप के, जिसमें रिजल्ट आ गया है, वो आपको अभी हम बताते हैं। लेकिन मुकाबले वाकई कल बड़ा अपसेट हो गया एक और साथ साथ एक ऐसा मैच दैट कुड हैव बीन एन अपसेट। आई थिंक कैनेडा डिड पुट अप अ ग्रेट फाइट अगेंस्ट बेल्जियम यस्टरडे। दे वर सो अनलकी। बड़ा अग्रेसिव गेम उन्होंने खेला, लेकिन जस्ट कुड नॉट स्कोर यस्टरडे। बहरहाल तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम फुटबॉल के हवाले से भी। विल टॉक अ बिट ऑफ क्रिकेट एज वेल। लेकिन आई थिंक आज महवर डिस्कशन का जो है वो फुटबॉल ही होगा। व्हाट्सएप से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट क्या है ताज़ा तरीन खबर थोड़ी सी तो हमने बात कर ली है आज जो मैचेस होने वाले हैं और हो चुके हैं उसके हवाले से। बट येस, अपडेटिंग यू विद दैट, वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। आज भी इवेंट में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से एक खेला जा चुका है। पहले में कैमरून और स्विट्जरलैंड का हुआ मुकाबला, जिसमें स्विट्जरलैंड ने 1-0 से जीत हासिल कर ली। देन दूसरा मैच जो कि शाम 6 बजे खेला जाएगा, यूरुग्वे का मुकाबला होगा जनूबी कोरिया से। एंड देन तीसरे मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोर्चुगाल का सामना होगा घाना से। एंड देन आज होने वाला आखिरी मैच टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ब्राजील का मुकाबला होगा सर्बिया से। यस, फीफा वर्ल्ड कप में चौथे रोज एक और बड़ा अपसेट हुआ। ऑलरेडी अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट दैट। जर्मनी को शिकस्त हुई है जापान के हाथों, एक के मुकाबले में 2 गोलों से। हाथों का जिक्र इसलिए आ गया बिकॉज अगर आपने देखा हो, जर्मनी पता नहीं फुटबॉल खेलने आयो, फुटबॉल खेलो, लेकिन बस कंट्रोवर्सी करनी है। आपने देखा होगा मैच से पहले उन्होंने अपने जो है वो मुंह पे हाथ रख के जो है वो एक तस्वीर खिंचवाई थी, ये बताने के लिए कि उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, अपने आज़ादी इजहार की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। जर्मनी में भी, कतर में भी जर्मनी बनाने की कोशिश वो कर रहे थे। दे शुड हैव बीन फोकसिंग ऑन द फुटबॉल इटसेल्फ, बिकॉज ऐसा लगता है कि उनकी कंसंट्रेशन लूज हुई। जापान ने उनको 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त की। बड़ा अपसेट विदाउट डाउट। जर्मनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा मराकश ने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट क्रोएशिया की टीम के साथ 0-0 से मैच बराबर खेला। इसके हवाले से हम कल भी बात कर चुके हैं। आई थिंक मोरक्कन्स विल बी वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज दोनों टीमों के दरमियान रैंकिंग का भी बड़ा फर्क है और क्वालिटी का भी बड़ा फर्क है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स व्हाट यू डू ऑन दैट पर्टिकुलर डे। स्पेन ने कोस्टा रिका के खिलाफ 7 गोल्स की बारिश कर दी। जी हाँ, 1-2 नहीं, 7 गोल्स अब तक की फीफा वर्ल्ड कप का सबसे वन साइडेड मैच खेला गया। लेकिन कल जो आखिरी मैच रात 12 बजे खेला गया, वर्ल्ड नंबर 41 टीम का मुकाबला हुआ था। वर्ल्ड नंबर 2 टीम कनाडा वर्सेस बेल्जियम। कनाडा का हम जानते हैं कि फुटबॉल इज़ नॉट देयर मोस्ट पॉपुलर, जिसको वो भी सॉकर कहते हैं, इट्स नॉट देयर मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अमेरिकन स्पोर्ट्स पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है, विंटर स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे हैं। लेकिन वहाँ पे दे हैड A brilliant display against Belgium। तहम बेचारे 1-0 से शिकस्त खा गए थे। Even missed a penalty shoot there। पेनल्टी उनको एक मिली थी जो वो मिस कर गए थे। Unfortunate for them। So Belgium winning that game 1-0। बिल्कुल जी, एंड कनाडा पुट अप अ वेरी गुड फाइट देयर और बहुत अच्छा एक मुकाबला रहा। बट मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, सो टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी लियम लिविंगस्टोन्स मसाइल से 2-4 हैं। एक इंजरी जो कि वो इंजरी हुई थी उनको, ऑलराउंडर की इंजरी जो है वो मुकम्मल उससे सेहतियाब नहीं हुए हैं। लियम लिविंगस्टोन पाकिस्तान के खिलाफ पिंडी टेस्ट में डेब्यू करने के लिए एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। मगर लिविंगस्टोन ने इंग्लिश मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वो अभी तक 100% फिट नहीं है, बट उम्मीद ये कर रहे हैं कि पिंडी टेस्ट तक ही विल बी फिट। सो लेट्स होप एंड लेट्स विश दैट आपको लिविंगस्टोन जो हैं वो पहले टेस्ट मैच में रावलपिंडी में इन एक्शन। कुछ जाते जाते बात करते हैं हॉकी के हवाले से भी। और पाकिस्तान की टीम जो है वो नेशंस कप में शिरकत करने के लिए टुकड़ियों में रवाना होना शुरू हो गई है। पहली टुकड़ी जो है वो कल चली गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो उसको डर लग रहा था कि पता चला सुबह उठे और पता चला जी नहीं जी वो जो है ना आधी टीम पहुंच गई, आधी नहीं, वो पहुंची नहीं, आधी टीम रवाना ही नहीं हो पाई, वो ओके टू बोर्ड नहीं हुए थे। इस तरह के इशूज आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम और ऑफिशियल्स के 9 जो मेंबर्स हैं
वो साउथ अफ्रीका रवाना हो गए हैं फंड्स की तमाम तर कमियों के बावजूद। ये बात याद रहे कि PHF को अभी तक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जिस मदद का ऐलान किया था वो फंडिंग रिसीव नहीं हुई है। समरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के दस्तखत की मुंतज़र। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनका क्या इससे ताल्लुक़ है, तो जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है बेसिकली उसके पास ये मिनिस्ट्री भी होती है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री। इनके दस्तखत की मुंतज़र है, लेकिन आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदानों का फोकस कहीं और है। याद रहे जी, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहला मैच 28 नवंबर को खेलेगी। गुड लक टू देम। सो विच मीन्स जस्ट 4 more days टू गो, और अभी तक जो है वो सारी जो फाइनेंसेस की प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। बट अच्छी खबर ये है कि टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सो द प्लेयर्स कैन फोकस देयर एंड ऑब्वियसली द मैनेजमेंट, the administration would be focusing on the finances. Moving on further, पाकिस्तान वॉलीबॉल के हवाले से अगर हम बात करें तो यस, अगर एक स्पोर्ट में ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरे स्पोर्ट में कुछ बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान 17 साल बाद इंटरनेशनल वॉलीबॉल इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का इफ्तिताह आज होगा और इवेंट में ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शिरकत करेंगी। 6 रोज़ा इवेंट में रोज़ाना 2 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो शाम 4 बजे और दूसरा मैच 6 बजे शुरू होगा। वॉलीबॉल चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जारी रहेगी। सो यस, किसी और स्पोर्ट की भी कहीं ना कहीं सवेरा आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो 90s की मैं बात कर रहा हूँ और आप तो बहुत ही छोटी होंगी खैर, तो उस वक्त दोपहर में, जुमे की दोपहर को वॉलीबॉल आया करती थी बहुत ज़्यादा, मुझे याद है। और बड़े अच्छे लेवल के पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ वेरी डिसेंट वॉलीबॉल साइड एट वन पॉइंट इन टाइम। लेकिन शायद आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो पता चलें कि यार अभी जरा वॉलीबॉल पे फोकस पाकिस्तान में थोड़ा इंप्रूवमेंट आई है। इनफैक्ट अ बिग पाकिस्तानी कंग्लोमरेट एंग्रो कॉप जो है दे आर इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान की टीम को वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। सो गुड टू सी। उस जमाने में एक सिगरेट कंपनी इसको स्पॉन्सर करती, काफी सारे इवेंट्स को, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप जो मिलती थी वो बेहतरीन किया करते थे उसको उनके इश्तिहार। बल्कि मुझे याद है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग हफ्ते में एक दिन उसका प्रोग्राम आया करता था, वो भी एक सिगरेट की कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती थी। बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट। अब बात सेहत के लिए मुज़र है, बट यस स्पोर्ट्स के लिए बड़ा वैसे वो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन थी कि स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है वो एक सिगरेट की कंपनी एसोसिएटेड हो। हमारा सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक क्रिकेट इवेंट होता था, एग्जैक्टली, इसकी बुक छपती थी, आई रिमेंबर। बहुत सारे लोग उस वक्त भी कहते थे यार ज्यादती हो रही है, सिगरेट सभी पी रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस पे पाबंदी क्यों लगा दी है। बट बहरहाल सो वी हैव गॉट आवर गेस्ट रेडी विद अस। आज हमारा टॉपिक मेन फुटबॉल रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स जारी है और आज हम बात करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ऑनेस्टली अभी एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी देयर हैव बीन 2 मेजर अपसेट्स एंड देयर हैव बीन सम स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस, वो टीम जिनसे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ऑल द टीम्स पूरी कोशिश करती हैं कि अपना ए गेम जो है वो पुट अप करें, और कम से कम इन केस ऑफ सऊदी, इन केस ऑफ जापान, इन केस ऑफ कनाडा हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। मोरक्को को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब्दुल मुईद हमारे साथ मौजूद हैं। मुईद इससे पहले भी हमारे साथ मौजूद थे जिस दिन हमने पहली दफ़ा फीचर किया था फीफा वर्ल्ड कप में। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, फुटबॉल के बहुत नॉलेज रखने के साथ साथ he manages a football club as well. So Muid, welcome back to Game Set Match. Hope you are enjoying the tournament. अस्सलाम वालेकुम, I hope आप लोग भी खैरियत से होंगे। Thank you अदील। The tournament जिस तरह हमने पहले दिन बात की थी, as per our expectations, it's going very well. Upsets देखने को मिले, कुछ predicted थे जिस तरह हमने पहली दफ़ा बात की थी about Germany. I told you Germany जो है they might face problems और वो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो upset था वो था अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया। What a match it was. Amazing. It was an amazing match। और मोहित, honestly speaking हम यही बात कर रहे थे कि ये जो upsets हैं ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं एक टूर्नामेंट को, बिकॉज ऑब्वियसली ठीक है जापान, जर्मनी, आई वुड से दे आर नॉट पोल्स अपार्ट, बट सऊदीया एंड अर्जेंटीना, ये तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से सऊदीज बड़े हुए हैं अर्जेंटीनियन फुटबॉल को देखकर, मेसी के फ़ैन बनकर, एंड सऊदीया बीटिंग अर्जेंटीना वाज अ वेरी बिग डील फॉर देम। Yes, indeed, it was। जिस तरह अर्जेंटीना ने स्टार्ट की थी गेम एंड एवरीथिंग, अर्जेंटीना played a very strong line। इनके पास from Di Maria to Messi to Lisandro Martinez, और
They had a very strong line. First half, it was all Argentina. Yes. It was all Argentina in the first half. There is no doubt in that. The game changed. जी बिल्कुल The way आपकी आवाज कट गई थी मोहित जी बिल्कुल मोहित आई एम सॉरी आपकी आवाज कट गई थी मोहित आप क्योंकि ज़ाहिर है यू अंडरस्टैंड द फुटबॉल स्ट्रैटेजी किस तरह गेम प्लानिंग की जाती है क्या होता है टेक अस थ्रू द सऊदी स्ट्रैटेजी आई मीन हाउ डू यू थिंक उनके जो मैनेजर हैं इस वक्त उनके कोच जो हैं सॉरी मैनेजर तो क्लब फुटबॉल में लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में कोच कहा जाता है उनके कोच जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया भर उनकी स्ट्रैटेजीज उनके कुछ वीडियोस भी आ रही हैं पीसीबी की तरह कि किस तरह वो खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं उन पे टेक अस थ्रू द सऊदी स्ट्रैटेजी किस तरह उन्होंने बीट किया इतनी ज़बरदस्त अर्जेंटीनियन साइड को I think the game, the way the game started, और उसके बाद it was very important कि Argentina after scoring the first goal, it was very important कि Argentina do score another goal to make them safe. लेकिन that did not happen और offside जो goals हुए it gave a little confidence to the Saudi team. And the credit goes to the manager क्योंकि in the second half we saw a totally different Saudi team. They were pressing very high. Messi himself, I was very disappointed by his performance. Other than the penalty, he lost possession for about 20 times in the game. Messi was not up to the mark. Man marking अच्छी थी. जो midfield है, it did not work. Argentina की Di Maria के उस तरह crosses नहीं आए. Back for Christian Romero, Otamendi, they were मेरे लिहाज से, especially the second goal जो उनके कैप्टन ने किया था. सऊदी अरेबिया के जो कैप्टन ने किया था, it was a wonderful goal. उसमें the defenders had to close him down और ये क्रिस्टियन रोमेरो का जो है एरिया बन रहा था and he did not put up the show there. लेकिन overall if we talk about the strategy, they were more willing for the second balls. अर्जेंटीना कहीं ना कहीं हमें नजर आई कि when it came to the tactics, they fell behind क्योंकि start में उन्होंने देख लिया अर्जेंटीना were quite happy with the possession they were keeping. But as soon as Saudi Arabia started to, put pressure on the ball, Argentinian players started losing ball. और उसी का फायदा उन्होंने उठाया. Both goals, you see both goals, they were on counter attack. So they made full use of the counter attack. और जितना भी आप देखें वर्ल्ड कप, even the club football में या फिर वर्ल्ड कप में, smaller teams का चांस ही तब होता है जब वो counter attack पे they take their chances and they score the goals. बिल्कुल, क्योंकि अर्जेंटीना स्टार्टेड ऑफ विद द गोल और उसके बाद जो है फिर सऊदिया ने वापस नहीं आने दिया. दो के मैं जब पोजीशन की बात करती हूँ तो ज़्यादातर ऐसा ही लगा कि अर्जेंटीना के पास ज़्यादा टाइम के लिए बॉल उनके पास थी, बट जो कम टाइम का एडवांटेज सऊदी टीम ने उठाया वो हमें दिखा कि उन्होंने कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से किया और उसका प्रॉपर फ़ायदा उठाया. बट इट वाज अ वंडरफुल कॉन्टेस्ट एंड ऑब्वियसली एन अपसेट इन द अर्ली, इट वाज नॉट इवन अ वीक डाउन राइट नाउ. नहीं, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ. बिल्कुल. और मोहित, हम भी जब थोड़ी बहुत जो फुटबॉल मेरे भी समझ में आती है, हम अपने ऑडियंस को यही बताना चाह रहे थे कि हाई पोजेशन गेम जनरली जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, यू हैव अ लो पोजेशन, यू हैव फ्यूअर चांसेस. आपकी जो ओपोनेंट टीम होती है उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं. आपके गोलकीपर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको बहुत मार खानी होती है, बॉलें खानी होती हैं. लेकिन मैं कल के गेम पे आता हूँ. कल रात में जो गेम हुआ बिटवीन कनाडा एंड बेल्जियम, आई मीन दोनों टीमों के दरमियान क्वालिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, दोनों टीमों के दरमियान रैंकिंग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा. कैनेडियंस का एक सर्टन ज़ाहिर है उनकी एक अलग दुनिया है जिसमें वो ज़ाहिर है आपको पता है अमेरिकन स्पोर्ट्स ज़्यादा, विंटर स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं. बट बेल्जियम फुटबॉल इज़ देयर नंबर वन. आई थिंक दे आर लिविंग अ वंडरफुल टाइम. लेकिन कल कनाडा ने पोजेशन भी मेंटेन किया. जो शॉट्स ऑन गोल थे दे वर वे अबव बेल्जियम. यानी कल आई थिंक अब तक जो अंडरडॉग्स की जानिब से जो बेस्ट सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी. अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट डज नॉट सजेस्ट दैट दे मिस्ड अ पेनल्टी एज वेल. तो कनाडा ने तो कल मेरे ख्याल से कमाल कर दिया. आई थिंक अब तक की जो कमज़ोर टीम्स हैं उसमें आई थिंक वर्ल्ड नंबर 41 है, आई थिंक अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 2. Canada were extraordinary yesterday night. Exactly, Canada were they played extremely well. इसमें Canada से ज़्यादा जो है what I want to highlight right now is Belgium. अगर आप देखें since 2014, after the 2014 World Cup, we have seen many great players from the Belgium side, starting from Kompany till Kevin De Bruyne, till Eden Hazard, Thorgan Hazard, and then yes, such players. We have seen such players.
लेकिन इनका भी व्हाट आई फील बेल्जियम का भी ना एक इशू है इंग्लैंड वाला. इंग्लैंड टीम हैज बीन इस since 2018 यूरोज, इंग्लैंड टीम जो है सॉरी 2018 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड टीम जो है इंग्लैंड टीम जो है इट हैज लुक डिफरेंट. Before that, I feel England team और जो Belgium team face कर रही है problem same was faced by the England team. They had too many stars in the team और उनके पास एक system नहीं था. They were very flat. What I saw yesterday as well, that Belgium team was very flat. जबकि उनके पास दरमियान में Yuri Tielemans और Alex Witsel जैसे midfielders खेल रहे थे. Kevin De Bruyne, they didn't get a lot of space. Yes, the credit goes to the Canadian team. They put up a great show. जिस तरह पहले भी हमारी बात हुई है, it's football. If you do not show up on the day, you do get into a problem. लेकिन at the same time, with so much quality, you are unable to break down a defense. It is a problem within your team because अब वो यही De Bruyne है जो हालैंड को प्रीमियर लीग के अंदर 14 goals अभी तक दे चुका है. So that means that there is a problem, not with the players, there is a problem with the system. And yes, on the other hand, hats off to Canada, how they played, how they tackled every ball that came into the box. In reality, अगर हम देखें Canadian team में तो they have only one star, and that is Alphonso Davies. And I think he played superbly last night. He led by an example. And I think he was the man of the match for them. Yes, indeed. And the major difference, अगर मैं दोनों टीम के major difference की बात करूं, I could see Canada being in a lot of sync together. वो players बहुत synchronized थे. जिस तरह अभी आपने भी बात की कि बेल्जियम में many players, many names, but individualities ज़्यादा दिख रही थी in comparison to Canadian team was in a very good sync. Right. This is what I observed. दोनों में I think that's a very fair point. और ये बड़ा challenge होता है जब आप इतने बड़े players को, जैसे कि naturally मोहित से हम आगे चल के बात भी करेंगे about a big match coming up tonight, which is the Brazilian side. और मेरा ख्याल से अगर हम स्टार पावर की, हमने लास्ट टाइम भी मोहित ये बात की थी, अगर हम स्टार पावर की बात करें, स्टार वैल्यू की बात करें, so when you look at the front line of Brazilian team, even their midfield, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त एक है टीम. लेकिन naturally अभी ब्राज़ील पे हम बात करते हैं, but मोहित, टीम्स लाइक अर्जेंटीना एंड टीम लाइक जर्मनी ये अपना पहला मैच हार चुके हैं. हम ये जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप में बहुत रेयर, आई थिंक 2010 वाज द टाइम जब स्पेन अपना पहला मैच आई थिंक स्विट्जरलैंड से हारा था, बट दे स्टिल वेंट ऑन टू विन द FIFA World Cup. Exactly. So, I mean, do you really see these teams, at least देखें ये pre-tournament favorite, जब भी वर्ल्ड कप होता है अर्जेंटीना जर्मनी favorites में से होता है. Do you really see them making a comeback जो अब तक आपने उनकी performance देखी है? Well, as far as Argentina is concerned, I think Argentina is in one of the easiest groups in the World Cup. So I do see Argentina going through. They had a bad match, और आगे भी उनके matches and they're not that tough. So I think they'll put their Messi का भी आखिरी World Cup है, Di Maria का आखिरी World Cup है, Otamendi का आखिरी World Cup है. So you know there are some big names, or they'll you know put their heads together and you know they'll look forward to getting back into the winning ways. But when it comes to Germany, I think Germany might face problems. मेरी आपसे on the first show ये बात हुई थी कि I believe Germany is going to struggle. There are a few main reasons. Number one, Germany does not have a proper striker. Kevin Havertz जो है, जो Chelsea का player है, he plays as the main striker, and he's not a striker. He's not a natural striker. He's a attacking midfielder. So this is what's happening with them. उसके अलावा they're missing on Toni Kroos. They have, I don't know, रात को Leroy Sané को why did he, जबकि Hansi Flick is a good manager. Last time जो Bayern Munich when they won the Champions League, he was their manager. But there were some different approach to the game. Just time हमने रात का मैच जो देखा, I believe कि they need to set up a different team. They need to. I personally believe that Leroy Sané should play on the left flank or the right flank with Serge Gnabry on either the left or right. ताकि जो players already, for example, Leroy Sané and Serge Gnabry, they play in Bayern Munich together as left-right wingers with Muller playing as attacking midfielder. If something is not working,
जो लोग क्लब्स में साथ खेल रहे हैं, let them play together so that because they know each other, it can give them a better advantage. I think Antonio Rudiger वाला एक incident आपने देखा होगा, that was quite disrespectful. जिसमें 1-0 score चल रहा था, and he showed a little disrespect to the other attacking player. Ball out हो रही थी and he started running like a joker. जो काफी वायरल हुई है वीडियो, लेकिन life comes at you fast और उसके बाद जो है you saw what happened. True. You're talking about players playing their final World Cup. ज़ाहिर है आज दो बड़े important players हैं. ज़ाहिर है हम रोनाल्डो की तो सब बात कर ही रहे हैं कि जी आखिरी वर्ल्ड कप है और उसका पहला मैच होगा. ज़ाहिर है रोनाल्डो अभी विद द मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो उनकी डिवोर्स हुई है और काफ़ी कहना चाहिए टर्बुलेंट किस्म की डिवोर्स हुई है, उस पर तो ज़ाहिर है सिलसिला. लेकिन मुहीद आज एक और आई थिंक इस सदी के इंटरेस्टिंग प्लेयर्स में से एक प्लेयर लुइस सुआरेज जो हैं वो भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और टुडे लेटर ऑन ही विल बी इन एक्शन. इनफैक्ट उनका मैच अब से आधे घंटे बाद जो है यूरुग्वाई विल बी टेकिंग ऑन साउथ कोरिया. सो डेफिनेटली आई थिंक डिएगो फोरलान की अगर हम बात करें, उसके बाद जो उनकी लेगेसी थी, आई थिंक सुआरेज, यस वी ऑल रिमेंबर दैट कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि वो जी उन्होंने हाथ से भी बॉल रोकी की. जी हाँ, और पता नहीं क्या क्या हरकतें और बहुत सारी चीजें और बहुत मैं कह रहा हूँ बड़ी हरकतें की हैं इसने. लेकिन जो भी था आई थिंक ही डिड कंट्रीब्यूट टू द यूरुग्वायन फुटबॉल. और यूरुग्वाई एक एट वन पॉइंट इन टाइम एटलीस्ट इन साउथ अमेरिकन रीजन they were team that was giving tough time to the big boys there in Brazil and Argentina. So some thoughts on Luis Suarez, Mohit? Luis Suarez is a player जो हमेशा ये लाइमलाइट में रहा है, बेशक अच्छी रीजंस की वजह से या बुरी रीजंस की वजह से, लेकिन he has always been in the limelight. Ajax में पहली दफा he bit a player and then he came to Liverpool. 2010 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट घाना लास्ट मिनट में इसने हैंडबॉल हाथ से बॉल रोकी थी जिस पे रेड कार्ड मिल गया था. इवेंचुअली घाना lost on the penalties. He became a hero there. And then after that 2014 के वर्ल्ड कप में if you remember he bit Clinini against Italy. और वो काफी था. 2018 में it was I think चीजें ठीक चली सुआरेज के लिए, कुछ संभल गए थे after going to Barcelona. लेकिन overall if you talk about Suarez is I still believe Suarez was a generational talent. How he played for Liverpool in the Premier League was totally amazing. I was a huge fan. एक वक्त में, क्योंकि आज सपोर्ट आर्सेनल, एक वक्त में आर्सेनल वेंगर ने बिड भी की थी 40 million and 1 pound. 40 million and 1 pound. Yeah, I remember that. Yeah. It got us all very excited. I'm a big Arsenal fan too, Mohit, so we are brothers now. लेकिन it got us all excited. I mean ये वो ओज़िल वगैरह का टाइम था and we thought कि ये लोग साथ खेलेंगे तो बड़ा मजा आएगा. But that never went through, unfortunately. That never went through, unfortunately. लेकिन Suarez, I think he's a legend of the game. Uruguay का before Suarez it was Diego Forlan, then it was Luis Suarez. Now this is Darwin Núñez, I believe, जो Liverpool player right now. He's going to be the future of Liverpool. So Uruguay is a good team. 2010 में they became I think they were overall third in the World Cup. 2014 went okay, 2018 went okay, but this time round it's the final World Cup for Luis Suarez. Even Diego Gordon, their centre back, he played for Atletico Madrid. Then he went to Inter Milan. He's a great defender. It's his last World Cup as well. So let's see how it goes. Many last World Cups और जहाँ सुआरेज की आपने बात की है तो sports need such characters and I believe he is one of those characters. But now talking about Brazil versus Serbia, तो आखिरी आज का मैच जो रात को 12 बजे खेला जाएगा. If you look at both the teams, एक ranked 1 है, एक ranked 21st ranked है Serbia. But दोनों जो teams हैं उनका style of play is attack mode. They're stronger on their attacking side. So should we expect a good attacking match with more goals or less goals? I think it should be a very interesting game. First game, Brazil is one of the favorites. People are either calling England or Brazil the favorites. It should be a good game. And Brazil, as we discussed before, they have huge attacking options from Gabriel Jesus to Neymar to Rafinha to Gabriel Martinelli to a lot of different players in a lot of different positions. It's an attacking army that Brazil has.
Yes, आप you know इनके पास even if you look at their bench, you have a lot of excellent players. Even the centre backs, I'm a huge fan of their centre backs. Uh, the Thiago Silva and Marquinhos, Yeah. जो PSG का captain भी है right now. They're very good centre backs. And then I think this is the first, this is the only team except England who has two world-class keepers. One is Becker Ellison of Liverpool, and the second one is Ederson from Manchester City. Both are top goalkeepers right now in today's world, and they have a superb team. I think it's going to be very interesting. It's going to be very hard to break Brazil down. It's going to be very easy for Brazil with so much potential and so much attacking players to score goals against Serbia. Yeah, absolutely. Serbians जो है वो naturally I think Mitrovic जो English Premier League देखते हैं, they have seen him play for Fulham और Fulham का season भी अच्छा जा रहा है. Mitrovic is among the goal scorers as well. लेकिन फिर भी I think Brazilians ख्याल यही है कि जीत जाना चाहिए इनको, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो हो रहा है anything can happen. But जैसे कि अभी मोहित ने बात की, I think they've got just too much talent इस वक्त ब्राज़ीलियन साइड के साथ. उनकी बेंच मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच इस वक्त किसी टीम की है तो वो ब्राज़ील की है. चलें जी, फाइनली अब ज़रा मोहित बात कर ही लेते हैं. फाइनली से मुराद ये कि वाकई मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोक के रखा हुआ था, लेकिन आज बात करते हैं. और दे विल बी टेकिंग ऑन घाना. आज रात 9 बजे ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच होगा. और घाना की जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, ज़ाहिर है घाना बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है. अफ्रीका में भी जो क्वालिफाइंग टीम है उनमें भी ये आई मीन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक दे आर द लोएस्ट रैंक साइड in the FIFA World Cup right now. 60-61 इनकी रैंकिंग है, and they are playing against Portugal. Now क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपनी ज़ात जो है ज़ाहिर है काफ़ी फोकस में है. मुहीद, एक बहुत क्रिटिकल टाइम पे उन्होंने एक बहुत एक्सप्लोजिव इंटरव्यू दिया. एक एक चीज़ नोट की जा रही है रोनाल्डो की इस वक्त. मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्लेयर इतना स्कैनर में है इस वक्त जितना. ज़ाहिर है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो भी है ट्रॉफी नहीं जीत रहा है, कुछ भी है, इट्स अ बिग क्लब, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड. उनके खिलाफ अल्लाह में बगावत बुलंद करके ज़ाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अब ख़त्म हो गया. सो प्रेशर होगा रोनाल्डो के ऊपर मुहीद बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर रोनाल्डो पे प्रेशर है तो फिर पुर्तगाल पे भी प्रेशर होना है. सो हाउ डू यू सी देम गोइंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड कप? I think Portugal is one of the dark horses of the World Cup. I think this is one of the teams as well, like Belgium, जिनके पास बहुत ज़्यादा superstars हैं. अगर आप defense देखें तो then you have Ruben Diaz, one of the Joe Cancelo, both from Manchester City. These are just a few names, and then when you go to the midfield, you have Joe Moutinho, you have Bernardo Silva, you have such kind of players, and then attacking options, obviously Cristiano Ronaldo, and then such players. So I think it's going to be a good match between Ghana and Portugal, but I think Portugal is going to win out of it. There are numerous reasons behind it. What I like about Cristiano Ronaldo, jab Cristiano Ronaldo jo hai, he has been in a situation where he has this pressure to perform. He always performs. This is the major difference between Cristiano Ronaldo and Messi. Messi cannot perform under any kind of pressure. When he's at ease, when he was at Barcelona, even at PSG, he has some privileged players around him. But when it comes to Ronaldo, he has always been a man of hard work, dedication, determination, and this is what. And he has very strong nerves. He has ice, as we call it, ice in his veins. He's always calm under pressure, and that's why he performs on the big stages. शायद आपको एक मैच याद हो, Atletico Madrid versus Juventus, or Atletico Madrid won at home 2-0 around 2-3 years ago. And Juventus lost in the away fixture. Right after after that moment, in next week in the home fixture, Ronaldo scored a hat trick, and Juventus went through on to the quarterfinals of the Champions League. So Ronaldo has always been a man of big games, having a lot of nerves. Though he doesn't need to prove anything, but फिर भी जब ऐसी मेरे ख्याल से एक सिनेरियो बनता है तो
he needs to prove more now for the fact because जिस तरह की ये controversy मैन्यू के साथ रही है, but Kevin Peterson was very vocal about supporting Cristiano Ronaldo. He gave an interview जिसमें उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को काफ़ी बैक किया है सारी। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फ़ैन बेस है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें, ग्लोबल जिसे कहना चाहिए कि फेम की बात करें, आई थिंक कोई भी एथलीट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आसपास भी भटकता होगा। येस, अ लॉट ऑफ पीपल से मेसी वर्सेस रोनाल्डो, लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट मोहित का है कि मेसी को एक सर्टन माहौल चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन रोनाल्डो डज परफॉर्म जहाँ भी वो खेला है। ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा उसमें एक सेल्फिशनेस वाला एलिमेंट है, बट ज़ाहिर है जब आप उस लेवल पे होते हैं। सो या आई थिंक जो आपने केविन पीटरसन की बात की ये हो गया, प्लस पियर्स मॉर्गन जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया है वो बहुत इज़ वेरी पॉपुलर, वो भी एक कैरेक्टर है ज़ाहिर है, बट उसका यही है कि वो भी बड़ा सपोर्ट करता है रोनाल्डो को। बट I think for any Arsenal fan it was nice to see Manchester United in some turmoil कि जो है इनके साथ जो हो रहा है, बट नहीं डेफिनेटली बिग प्लेयर फॉर श्योर। सो मुईद, नेचुरली आपसे जब बात होगी तो अब कल से सारी टीमें अपना दूसरा जो मैच है वो खेलना शुरू कर देंगी, सेकेंड लेग जो है वो शुरू हो जाएगा। आखिरी बात जो आपसे पूछूंगा वो ये कि विच टीम सो फार हैज इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, नॉट नेसेसरीली दे वन द गेम और व्हाटएवर, बट कौन सी टीम आपको अभी तक सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है जो तो अब तक फुटबॉल आपने देखी है? Being very fair, I think Saudi Arabia has played tremendous. Nobody was expecting. एक होता है ना कुछ expectations हो. Nobody was expecting Saudi Arabia. The way they came out in the second half, it was amazing, totally amazing. Overall, दुनिया में जो है football has evolved, has changed. It's not about keeping a lot of possession now. It's the high pressing game now. Liverpool does that very good. Now Arsenal is doing very good off the ball running, off the ball. You know, the desire to take the ball from the opponent, and this is what आजकल जो है change. It makes a difference in the games. So Saudi Arabia was top notch, and they did it very well. Other than that, I was not expecting Spain to play that good. Costa Rica is a decent team. Spain was playing very good. I liked how Luis Enrique played Rodri as a centre back rather than as a midfielder, because he's a defensive midfielder. He kept Busquets inside. He used Rodri as well, and then he played Pedri and Gavi, the two young talents, as attacking midfielders. So it was a very good tactic that worked out fine, and they scored 7 goals. Great, Moeed. Thank you so much. Thank you, Moeed, for your time and sharing your footballing knowledge and good learning for us और हमारे जो दोस्त देख। इंशाल्लाह अभी फीफा वर्ल्ड कप तो ज़ाहिर है अभी चल ही रहा है और आपसे आने वाले दिनों में और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही होगी। Exactly, और बहुत सारी डिस्कशन हो रही होगी किस तरह आपने मैच एंजॉय किया और किस तरह हमने वो मैच एंजॉय किया। बट मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट पे अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। सो क्रिकेट के हवाले से जब इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान हुआ पाकिस्तान टीम का, सो 2 नाम सामने आए, जो अबरार अहमद और मोहम्मद अली का नाम सामने आया। और बहुत सारे लोग जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं फॉलो करते उन्होंने कहा ये मोहम्मद अली कहाँ से आ गए, मोहम्मद अली ना रेडार में थे ना कहाँ थे, और अचानक से मोहम्मद अली का नाम आ गया। सो यस, मोहम्मद अली को बेहतर जानने के लिए हमने जो है ये मौका हासिल किया कि मोहम्मद अली से ज़रा डिस्कशन करें, एंड कादिर ने जो है वो उनसे बात की है। आइए थोड़ा सा बेहतर जानते हैं मोहम्मद अली। बिल्कुल, पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, और टेस्ट स्क्वाड के ऐलान में जब एक नाम सामने आया मोहम्मद अली, फास्ट बॉलर, तो सब जो हैं वो हैरान हो चुके थे कि मोहम्मद अली कौन है। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले ये ख्वाब होता है तमाम क्रिकेटर्स का कि टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की कैप रिप्रेजेंट करना। कितनी खुशी हुई सबसे पहले जब नाम आया, तो क्या फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपना नाम वहाँ पे देखकर, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास अल्फाज ऐसे हैं कि मैं इस खुशी को लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। अच्छा अली, आप ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्रिकेट का सफ़र जो है वो अमूमन तौर पर गली मोहल्ला से शुरू करता है। तो आप सियालकोट में पैदा हुए, तो वहाँ पर जो है वो गलियाँ भी बड़ी तंग तंग हैं, हमने देखा है। तो क्या कैसे खेलते थे? वालिदैन मना करते थे क्रिकेट खेलने से? जी, घर से तो बहुत सख्ती थी, बिल्कुल परमिशन नहीं थी मिलती, क्योंकि यानी थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है हमारा, तो पढ़ाई होगी तो क्रिकेट
खेल सकते हैं आप, अगर पढ़ोगे नहीं तो नहीं खेल सकते, तो उसकी वजह से। और जहाँ तक क्रिकेट खेलने की बात है तो घर में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद स्ट्रीट क्रिकेट, फिर ग्राउंड्स में गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते गए। अली, हमने देखा है कि कई लोगों के जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, जो बड़े सितारे बन जाते हैं, उनका भी अमूमन तौर पर कोई ना कोई हीरो ज़रूर होता है। आपका फास्ट बॉलिंग में हीरो कौन था कि जिसको देख के मोहम्मद अली ने फास्ट बॉलिंग शुरू की और कहा है कि ये बस इसी तरह बनना है? वैसे तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं और उन सब से ही सब कुछ ना कुछ आप कभी भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो मुझे 3 फास्ट बॉलर्स पसंद थे उनमें शुएब अख्तर, शेन बॉन्ड और डेल स्टेन। अच्छा, तो शाहीन शाह अफरीदी अभी हमारे जो हैं वो एक प्लाटिनम जिसे कहते हैं बॉलर हैं, तो शाहीन चूँकि इंजरी का शिकार हैं, आपके साथ नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ़ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शाहीन का किधर रेट करते हैं और तमाम जो अभी करंट फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान टीम में उनको किधर रेट करते हैं? जाहिर सी बात है, शाहीन जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव भी किया है। और बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर वेरी गुड। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई आम बात नहीं है, बहुत ऑनर की बात है। और आप मेरे ख्याल में 25 करोड़ आवाम को बीट करके फिर इस लेवल तक पहुंचते हैं, तो अगर आप डिज़र्व करते हैं तो यहाँ पे पहुंचते हैं। अली, हमने जब आपका नाम आया तो उस वक़्त आपने घर वालों से बात की, वालिदैन से, वालदा से बात की, तो क्या तासुरात क्या थे घर वालों के? ज़ाहिर सी बात है कि जब अम्मी से बात हुई मेरी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी और बस यही कह रही थी कि जितनी ज़्यादा मेहनत की थी, जो स्ट्रगल मैंने की थी, उसका फाइनली अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दे दिया। अली, हमने जिससे भी पूछा जब आपका नाम आया तो सब हैरान थे कि मोहम्मद अली कौन है। सवालात भी हुए चीफ सेलेक्टर से, और जब जिससे भी पूछा आपके स्टैट्स के मुतालिक तो उनका यही एक जुमला कॉमन था कि मोहम्मद अली सुबह से लेकर शाम तक एक ही स्पीड से बॉलिंग करता है। तो इसकी क्या वजूहात क्या हैं? जिस प्रोसेस से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करते हैं, जितनी मुश्किल करते हैं, क्रिकेट इज़ जस्ट लाइक एन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी तो मैचेस में आपको उतनी आसानी होगी। तो प्रैक्टिस मैंने कोशिश यही की है कि प्रैक्टिस मैं ऐसी ही करूं कि मैचेस में मुझे कोई मुश्किल कभी पेश ना आए। तो अगर इंशाल्लाह ताला आपको जब मौका मिलता है प्लेइंग 11 में, तो इंग्लैंड का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको सोचा है कि इसको बस मोहम्मद अली ने इधर ही बॉल करनी है और इधर ही आउट करते रहना है? मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट आप कह सकते हैं। मेरे लिए हर बैट्समैन ही इम्पोर्टेंट है और मैं कोई वक्त से पहले ही कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। तो ये है कि कोशिश अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने अकादज़म ट्रॉफ़ी में बॉलिंग की और जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं, तो बस उसी चीज़ को वहाँ पे भी रिपीट करूँगा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और जिस तरह जो है बात की अभी मोहम्मद अली ने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। दिस मेक्स अ डिफरेंस अदील व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर्स गेटिंग एजुकेशन एंड द वे ही रिप्लाइड टू दैट। वरना तो वो होता है ना, नहीं जी फलाने को मैं आउट कर दूंगा, पहले से दावे कर दिए जाते हैं। उस तरह के दावे नहीं किए, which is a good side to see. which is a good side। और जाहिर है एक और भी जो चीज़ है वो ये that he'll be making his debut, which we hope that he will इंशाल्लाह। 30 साल की उम्र में ज़ाहिर ये होंगे, जो कि एक ज़ाहिर मेच्योर उम्र होती है, इंसान में मेच्योरिटी आ जाती है। जनरली हमारे यहाँ शादियाँ भी हो जाती हैं इस उम्र में, शादी भी हो जाती है, शादियाँ बच्चे भी हो जाते हैं। हाँ, बच्चे यहाँ पे हम जो है वो जमा का जो है वो सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स विश अबरार ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर, इंग्लैंड भी अपने साथ एक बच्चा ला रहा है, रेहान। ही इज आल्सो व्हाट 18 इयर्स ओल्ड एंड अगर वो खेलते हैं तो ही वुड बी द यंगेस्ट। वाओ, दैट इज अमेजिंग। सो आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ विद सम फुटबॉल ओवरडोज टुडे। आई होप यू एंजॉयड दैट। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में आएंगे हाजिर। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। What a wonderful line.